वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सबको वेलकम टू वीडियोलॉजी बाय शो। सो इस वीडियो से हम लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ लिए हैं 64 टॉपिक्स और आप 65 टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। और सेशन जो एक्सपायर हो गया, अब मैं इसको लॉगिन करती हूँ, फिर आगे चलते हैं। क्विज ले लेते हैं। ये हमने लिखा हुआ है। अपनी वीडियो को सुन लेते हैं। Human activities which are adding all these pollutants in air, in waters and soil. So एक बहुत बड़ा drawback, एक phenomenon जो appear हो रहा है, that is ozone depletion. Ozone, we know its formula is O3, so that is the molecule which is containing 3 oxygen atoms, and this is a bluish gas which is harmful for the life. So it is harmful for the life when if it is present on the surface of the earth या हमारे troposphere के अंदर इसकी amount अगर increase कर जाए तो ये breathing के through बहुत serious diseases या disorders जो है वो cause कर सकती है. But this ozone when it is present in the stratosphere, we have studied that this ozone is actually acting as a filter, और ये बहुत ही strong filter है जो कि सन से आने वाली ultraviolet radiations को, इसमें particularly UVBs हैं और extreme ultraviolet radiations हैं, उनको हमारी अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंचने देता. So all these ultraviolet radiations are radiated back in the space. So ozone is absorbing all the bands of ultraviolet radiation and it is saving the life beyond the planet Earth. लेकिन human activities are adding up certain compounds in our atmosphere which is damaging this ozone in stratosphere. और वो कंपाउंड्स जो कि मेजर इंडस्ट्रियल और डिफरेंट ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको कि ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे हैं, वहाँ पर उनके प्रोसेसिंग में और उनके मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही हैं. सो दीज आर द हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेटिंग इंडस्ट्री, दे आर कंज्यूमिंग द हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फॉर द पर्पस ऑफ रेफ्रिजरेशन. उनके कंप्रेसर्स के अंदर ये गैसेज जो है वो यूज की जाती रही हैं. इसके अलावा दे आर डिफरेंट सॉल्वेंट्स, एरोसोल्स में जो गैसेज एज प्रोपेलेंट एड अप होती हैं, दे आर आल्सो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर रिलीज्ड इन आवर एयर because of these activities, industrial activities. So if you look at this image, we would see that solvent cleaning products are adding up 36.1% of ozone depleting substances in our air. Sterilization के process में जो gases या vapors use हो रही हैं, they are adding up 3.0% of ozone depleting substances. Refrigeration की industry और air conditioning की जो industry है और ये जो products utilize होती हैं, they are adding 29.6% of ozone depleting substances in our air. Foam industry is adding up 14.3% of these substances. एरोसोल्स जो प्रोपेलेंट्स को यूज कर रही हैं वो 5% ऐड करते हैं. इसके अलावा दूसरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो 12% एडिशन कर रही हैं इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का हमारी एटमॉस्फेयर में. सो लेट्स स्टडी हाउ दिस ओजोन इज बीइंग डिप्लीटेड इन स्ट्रेटोस्फीयर एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन ऑन आवर एनवायरनमेंट. The second layer, called the stratosphere, contains the ozone layer. The ozone layer is made up of a highly reactive molecule called ozone, which contains 3 oxygen atoms. Ozone is a trace gas in the atmosphere. There are only about 3 molecules for every 10 million molecules of air, but it does a very important job. The ozone layer acts as Earth's sunscreen, absorbing about 98% of damaging ultraviolet or UV light. But the ozone layer has gotten thinner. Chemicals called chlorofluorocarbons, or CFCs, are the primary culprits in ozone layer breakdown. A CFC is a molecule that contains the elements carbon, chlorine, and fluorine. CFCs are mostly found in refrigerants, aerosols, and plastic products. When CFCs are exposed to ultraviolet rays in the atmosphere, they break down into substances that include chlorine. The chlorine reacts with the oxygen atoms in ozone and rips apart the ozone molecule. Areas of damage in the ozone layer are often called ozone holes, but that name is misleading. Ozone layer damage is more like a thin patch, with the thinnest areas near the poles. The ozone layer above the Antarctic in particular has been impacted by pollution since the mid-1980s. There, the region's low temperatures speed up the conversion of CFCs to ozone-damaging chlorine. About 90% of CFCs currently in the atmosphere were emitted by industrialized countries in the northern hemisphere. In 1989, the Montreal Protocol banned the production of ozone-depleting substances. Since then, the amount of chlorine and other ozone-depleting elements in the atmosphere have been falling. Scientists estimate that chlorine levels will return to their natural state in about 50 years.
By then, the Antarctic ozone hole will shrink to smaller than 8 million square miles. So इस वीडियो में भी हमने स्टडी किया कि कैसे ओजोन डिप्लीशन इज बीइंग कॉज्ड बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. सो द O3 इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन. सो रिजल्टेंटली O3 का वॉल्यूम हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में थिनिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट थिनिंग वुड रिजल्ट इन पेनिट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन. और वंस लाइक दीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दे आर एबल और सक्सेसफुली रीच ऑन आवर सरफेस, इसके जो है बहुत से नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, और इन नेगेटिव इंपैक्ट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पेनिट्रेशन इज इंक्रीज एंड इट इज कॉजिंग स्किन कैंसर इन ह्यूमंस. एंड द मेजर टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर वुड बी बेसल सेल्स एंड स्क्वामस सेल्स कार्सिनोमास एंड विच आर लिंक्ड टू द यूवीबीज. और जब तक ओजोन की लेयर एक थिक फॉर्म में मौजूद है, ये टाइप जो है कैंसर की अपीयर नहीं होती, बिकॉज इट इज वेरी स्पेसिफिकली लिंक्ड टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूवीबी. Malignant melanoma, it is a lethal type of the cancer and it is related to UVA and UVB, और ओजोन डिप्लीशन के रिजल्ट में ये डिजीजेज जो है या डिसऑर्डर्स जो है वो इनहेंस होना शुरू हो गए. अदर देन इट, कॉर्टिकल कैटरेक्ट्स एंड UVB एक्सपोजर, this is another negative impact. Increased tropospheric ozone. So because of this presence of these ozone depleting compounds, although कि ये डिप्लीट कर रहे हैं ओजोन को स्ट्रेटोस्फीयर में, लेकिन उसके रिजल्ट में हमारी जो ट्रोपोस्फीयर है, which is the next immediate layer of atmosphere, अर्थ सरफेस के बिल्कुल जो क्लोजेस्ट लेयर है, that is troposphere. So उस ट्रोपोस्फीयर में ओजोन के मॉलिक्यूल्स आर बीइंग एडेड ऑफ, उसका वॉल्यूम जो है वो ग्रेजुअली इस एक्टिविटी की वजह से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. So it will result in the different type of respiratory diseases. It will increase the production of vitamin D linked related with the UVB, because increased amount of vitamin D is dangerous for the skeletal system of humans and animals. Further, और इसके जो negative impacts हैं उसमें cyanobacteria are very sensitive to ultraviolet radiations, और we know कि हमारे cyanobacteria they are playing an important role in nitrogen cycle. So if their population size is affected, their activity is affected, the whole nitrogen cycle will be disturbed because of the malfunctioning of cyanobacterial population. बट लकीली ओजोन डिप्लीशन के फिनोमेनन को और इस इम्पैक्ट को जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस एड अप कर रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, इट विल बी रियलाइज्ड ऑन टाइम, और डिफरेंट गवर्नमेंट्स दे हैव टेकन एक्शन ऑन दिस, एंड देन द यूनाइटेड नेशंस आल्सो हैव प्रोपेगेटेड अ लॉट अबाउट ओजोन डिप्लीशन. क्लाइमेटोलॉजिस्ट और ऐसे अंटार्कटिक स्टडीज से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया, और इस अवेयरनेस के रिजल्ट में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो यूज होता रहा है रेफ्रिजरेशन के अंदर और एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री के अंदर, दैट इज कंप्लीटली बैंड बिकॉज द मेजर रोल इज प्लेड बाय दी CFC. सो दैट बैन वाज प्लेस्ड इन USA in 1996. In other countries CFC use is also reduced. So we are hoping कि ये प्रॉब्लम जो कि CFC की वजह से प्रोड्यूस हुई है, which is the thinning of ozone layer, particularly in Antarctic region. तो हमारा southern pole is very much exposed to ultraviolet radiations. So that problem will be solved by the half of the 21st century. But still, we need to keep this awareness very much public, ताकि जो ऐसे compounds जो कि CFCs नहीं है, but they can cause the depletion of ozone, उनकी utilization और use जो है उसको maximum reduction possible की जा सके.
सो फ्रेंड्स हमारी रीडिंग हो गई कंप्लीट. हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. ओजोन O3 is the form of oxygen comprising of 3 oxygen atoms instead of two as in oxygen gas. Ozone is the bluish gas which is harmful to breathe. Approximately 90% of the ozone is concentrated in the stratosphere, where it serves as the protective shield against incoming UV radiations, which it absorbs or prevent them are approximately which it absorbs prevent them from reaching to the surface. There are many pollutants. There are many pollutants which result in destruction of ozone as they interact with it and convert it to dioxygen gas O2. These pollutants are hydrocarbon refrigerants, solvents, propellants in aerosols, chlorofluorocarbons, hydrochlorofluorocarbons, methyl bromide, carbon tetrachloride, and methyl chloroform. Depletion of ozone will result in increased penetration of solar radiation to the Earth's surface, thus causing various skin diseases in humans and other animals. Okay, these include skin cancer, basal and squamous cell carcinomas, melanoma, and cortical cataracts. The concentration of ozone in troposphere is increasing, and ozone has been reported to be harmful for breathing as it causes difficulty in breathing and other respiratory disorders. There is a worldwide ban on usage of chlorofluorocarbons since 1993. This ban has been effective in healing the ozone, and it is expected that damage to the ozone will be recovered by the half of 21st century. Inshallah. In this lesson, the student will learn about ozone depletion, causes and effects of ozone depletion. हमने इसके अलावा जब प्लीज़ पढ़नी है, इसकी प्लीज़ हमने डाउनलोड की है, ओपन कर लेते हैं. O3 gas composed of 3 atoms of oxygen, bluish gas that is harmful to breathe. Nearly 90% of the Earth's ozone is in the stratosphere. Ozone absorbs a band of ultraviolet radiation called UVB, or a solvent cleaning product sources that harm the protective ozone layer. Solvent cleaning products 36.1%, sterilization 3.0%, refrigeration and air conditioning 39.6%, foam products 14.3%, aerosol 5%, other products including halons 12%. Okay. Ozone depletion substances: halocarbon refrigerant
solvents or propellants in aerosols, chlorofluorocarbons, hydrofluorocarbons, methyl bromide, carbon tetrachloride, methyl chloroform. सही. इसके बाद है इफेक्ट्स. इंक्रीज यूवी पेनिट्रेशन. Skin cancer in humans, basal and squamous cell carcinomas have been strongly linked to UVB exposure. Malignant melanoma, lethal skin cancer related to UVA and UVB, cortical characters and UVB exposure. ठीक है. इसके बाद हमारे पास है इफेक्ट्स में इंक्रीज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, और उसके बाद है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ विटामिन D linked with UVB. Cyanobacteria are sensitive to UV, indirectly affecting crops. Ban on use of CFCs since 1996. Problem will be resolved by half of 21st century. Okay. अब इसकी ले लेंगे पोस्ट असेसमेंट. लेट्स सी इसमें क्या है. NO2 is related in airs as a result of volcanic eruptions. Is released in air. Lightning, electrical activity, nitrogen fixation. I guess so. Dash is produced as a result of lightning. Toxic chemicals are recycled in water cycle through condensation, evaporation, infiltration, precipitation. I guess 40% of carbon dioxide emission comes from burning of gasoline, building structure, burning of trees, burning of fossil fuels. 40%. NO2 कैसे रिलीज होती है? प्रेसिपिटेशन से. नहीं, लाइटनिंग. प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ लाइटनिंग. नाइट्रिक एसिड. ठीक है, ये खराब है, कोई बात नहीं, इनका हम लोग सर्च कर लेंगे. ठीक है, और अब आगे चलते हैं. अगला है टॉपिक नंबर 66. लगता है आ जाइए. ठीक है, तो इसके बेस में ले देते हैं. सही है. Organism cannot light energy to heat, which is not true for a biome comprised of a single species. अभी मैंने टॉपिक कंप्लीट किया, इसलिए मैं लिख नहीं रही. And a dash from each biome. Okay, चलते हैं आगे, वीडियो को सुन लेते हैं. हमारा मेन टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लीशन में वी हैव स्टडीड कि किस तरीके से ये गैसेस और ओजोन की थिनिंग की वजह से टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग एंड सिमिलरली टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज आल्सो इंक्रीजिंग. इन दोनों फिनोमेनन के रिजल्ट में जो एक ग्लोबली एक और फिनोमेनन अपीयर हुआ है लास्ट 100 ईयर्स में, एंड इट इज बीइंग एनहांस्ड दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग. सो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा एक इशू है जो कि इट इज बीइंग डिस्कस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जितने भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कंट्रीज हैं दे आर डिस्कसिंग अबाउट कंट्रोलिंग मेजर्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. सो व्हाट दिस ग्लोबल वार्मिंग इज, वी नो कि हम जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस कोई एमिशन कर रहे हैं, जिसमें पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को एडअप किया जा रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में. सो दे आर ट्रैपिंग द हीट वेव्स और इंफ्रारेड लाइट्स व्हिच इज रेडिएटेड बैक फ्रॉम द अर्थ सरफेस. सो दे आर नॉट अलाउइंग दोस हीट वेव्स एंड इंफ्रारेड लाइट टू गो बैक इन टू स्पेस. सो रिजल्टेंटली हमारी अर्थ का और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, मेनली ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज करता चला जा रहा है, एंड हैड बीन ऑब्जर्व्ड दैट दिस टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड अबाउट 1 डिग्री सेंटीग्रेड सिंस 1900. सो ओवरऑल ये लास्ट 100 ईयर्स या मोर देन 100 ईयर्स ही हैं जिसमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ बीन रियली स्ट्रेंथन, और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की और अर्बनाइजेशन की रिजल्ट में ग्रीन हाउस गैसेस आर बीइंग रिलीज्ड इन आवर एटमॉस्फेयर. So other than greenhouse gases, pollution and deforestation are also the major reasons which are increasing the temperature of our atmosphere.
So overall atmospheric concentration of carbon dioxide, it has been measured in Antarctic ice cores. So the scientists which are working in Antarctica, they have taken the samples from the depths of the ice glaciers, or they have studied the concentration of carbon dioxide in the different layers of that ice. But they have observed कि 100 years or 100 plus years से पहले mostly हमारी atmosphere में जो carbon dioxide concentration थी, that has been relatively stable. तो 400,000 ईयर से लेकर लास्ट 100 और 150 ईयर्स तक ये कंसंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वाटर के अंदर, इट हैज रिमेन स्टेबल. सो इट्स बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ओवर द लास्ट सेंचुरीज कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हैज बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड. So overall, 30% का increase, which is totally a rapid or significant increase in the carbon dioxide concentration has been observed. So इसमें जो range है, it has increased from 270 parts per million to 370 parts per million, just over the period of 100 years. So in this image, we can see that overall, the temperature of Earth and carbon dioxide concentration in our environment, it has remained stable over the period of last 400,000 years. But then suddenly there is an increase in the temperature of Earth, and this sudden increase in temperature of Earth is called as global warming. टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से पहले there was no way to measure the carbon dioxide concentration, there was no data available, कोई ऐसा कोई क्लाइमेट साइंटिस्ट जो है उसका कोई मतलब एक लॉन्ग रिकॉर्ड जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो अवेलेबल नहीं है. सो हमारे पास जो सोर्सेज अवेलेबल है जिनसे कि हम प्रीवियस हिस्ट्री में या पेलियो हिस्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं इन द पेलियो एटमॉस्फेयर. दीज आर मोस्टली इन्फर्ड बाय द डिफरेंट मेथड्स. फॉर एग्जांपल द ट्री रिंग्स, वी नो द ट्रीज दे आर ग्रोइंग एवरी ईयर एंड एवरी ईयर दे आर एडिंग अप वन रिंग ऑफ द टिश्यूज इन दैट ट्री ट्रंक. सो बिकॉज ट्रीज आर मेड अप ऑफ कार्बन, that is a major ingredient, major component of the organic molecules the plants they are made up of. So अगर हम उसको कार्बन डेटिंग की टेक्निक्स के थ्रू और then the other techniques we can measure the age of that tree or particularly that ring, and then we can calculate the amount of carbon present in that ring. So that is the one technique. And then there is deep ocean sediments. They are scooped out, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आइस ग्लेशियर्स में से आइस को स्कूप आउट कर लेते हैं, इस तरह से हम सेडिमेंट्स को, रॉक्स को भी एक डेप्थ जो है हमारे ओशन बेड्स की, वहाँ से उसका एक सैंपल निकाल के वी कैन मेजर द लेवल ऑफ कार्बन इन दोज सेडिमेंट्स. एंड देन आइस कोर रिकॉर्ड्स, एज वी हैव सीन कि ग्लेशियर्स जो है दे आर गिविंग यू अ वेरी गुड रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट compounds including carbon dioxide and even the life which was present in the past time. Corals are very much sensitive to the temperature. So corals दुनिया में जहाँ पर भी exist कर रहे हैं, they are considered as an indicator or litmus paper for the global warming. So if the coral is alive, it is functioning well, it means temperature is good. But if temperature is increasing, it would start killing the corals. The one important example of coral death is the Great Barrier Reef in Australia, which is almost 90% finished. या हम कह सकते हैं उसमें से 90% coral reefs are damaged and there is no life present in those corals, and it's only because of increase in the water temperature. This is an example of ice core, जिसका भी हमने जिक्र किया है कि we have climate scientists, they have taken the samples of ice from the glaciers. Here we can see this is an illuminated picture, this is showing the seasonal patterns of ice and the carbon dioxide present in it. So the dark bands are showing the winter season and the lighter bands are showing the summer season. So that's how scientists they identify different gases in the water and the microbes present in ice, and they could identify the pattern of changes in these gases with the passage of time and with the seasons. So these cores they contain dust, air bubbles or isotopes of oxygen, and all these parameters they can be used to interpret the past climate of that area. So this increase in atmospheric temperature, it would ultimately lead to the increase in the water vapor content because of evaporation. So जितना ज़्यादा temperature increase होगा उतनी हमारी जो water bodies हैं, जिसमें major sea है, ocean, rivers and even the glaciers, वहाँ पे evaporation के थ्रू ज़्यादा water vapors हमारे atmosphere में add up होना शुरू हो जाएंगे. And we have just studied these water vapors are a strong greenhouse component. So they have this strong greenhouse effect, and resultantly जितना ज़्यादा हाइड्रोजन, जितना ज़्यादा वाटर वेपर्स हमारी एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहे हैं, ये उतनी ही हीट को हमारी स्पेस में रिलीज होने से या रेडिएट बैक होने से स्टॉप करेंगे. सो मोर वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, हायर विल बी द टेम्परेचर, एंड हायर द टेम्परेचर देयर विल बी मोर इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज. सो रिजल्टेंटली वाटर वेपर्स का कंटेंट हमारी एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करता रहेगा, और ये क्लाउड्स की फॉर्म में हीट रेडिएशन को, सनलाइट को तो रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन इंफ्रारेड लाइट को और हीट को जो कि हमारी अर्थ की सरफेस से एमिट या रेडिएट बैक हो रही होती है, उसको दोबारा से अर्थ की सरफेस की तरफ री एमिट कर देते हैं. सो रिजल्टेंटली टेम्परेचर विल इंक्रीज because this global warming is increasing with the addition of carbon dioxide, with the addition of water vapors in our environment. But somehow nature has its own healing process, and this carbon dioxide is actually is working in the form of a thermostat too. So the carbon dioxide cycle is a thermostat for the earth. If the temperature of earth is warming up, resultantly carbonate minerals की formation हमारे oceans में it will be at the higher rate, because the carbon dioxide it will be dissolved in the water, it will make bicarbonate ions, and these bicarbonate ions would settle down and it would add more mineral of carbon dioxide in our ocean beds. So the other thing is that the rate at which the oceans या water में of carbon dioxide की solubility rate increase कर जाता है at higher temperature. So in these two forms, carbon dioxide minerals and dissolved carbon dioxide in water, इसके थ्रू हम हमारे oceans हमारी atmosphere में से एक बहुत बड़ा component carbon dioxide का trap कर रहे होते हैं. So resultantly they are pulling carbon dioxide out of the atmosphere and they are adding up this carbon dioxide in our oceans. उसके रिजल्ट में ओशंस में कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोनेंट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कंपोनेंट डिक्रीज करना शुरू हो जाता है. And this reduced component of या volume of carbon dioxide in our atmosphere, it will reduce the greenhouse effect. So somehow जो एक temperature में बहुत ज़्यादा increase आना शुरू हो जाता है, that increase will be reduced. So that's how a carbon dioxide cycle is working as a thermostat for the carbon dioxide component in our atmosphere.
But at the same time, अगर temperature of atmosphere is being cooled down, it will reverse those two phenomena, which was addition of carbon dioxide minerals in the oceans, या उनकी formation of carbonates in our ocean, and the second was higher rate of solubility of carbon dioxide in the water. So if the temperature is reduced, रिजल्टेंटली ये दोनों प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड मिनरल की फॉर्मेशन स्लो डाउन हो जाएगी और सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेरिक फॉर्म में है उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है. सो ओशंस आर नॉट पुलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एफिशिएंटली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. So mostly carbon dioxide is staying in our atmosphere and acting as a greenhouse gas and causing the global warming. So that's how ये एक carbon dioxide emission is being a global issue, and it has a very bad negative impacts on the overall functioning of our environment and our ecosystem, even the human beings. तो फ्रेंड्स, हमारी जो वीडियो है कंप्लीट हो गई है. हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. सो हमारी रीडिंग है, यहाँ पर हमने पढ़ना है द ग्लोबल वार्मिंग इज द फिनोमेना ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इन लास्ट सेंचुरी. The average atmospheric temperature is 1 degree centigrade warmer than it was at the beginning of the 20th century. Major sources of global warming are greenhouse effect, pollution and deforestation. The analysis of Antarctic ice has revealed that Earth's climate has been stable for over last 400,000 years. ठीक है. However, there has been a 30% increase in temperature was observed in past few centuries. The amount of carbon dioxide increased from 270 parts per million, ठीक है, to 370 parts per million. Information about the atmospheric carbon dioxide concentrations can be measured using various techniques such as observations of tree ring, deep ocean sediment, ice core records and corals. An increase in atmospheric temperature. बस मैं भी आती हूँ. यहाँ पर हमारे पास है an increase in atmospheric temperature will lead to increase in water vapor content in the atmosphere. As we know that water vapors are a potent greenhouse gas, this increase will in turn result in increasing the temperature. The resultant higher temperature will again result in more evaporation of water, which again lead to more greenhouse effect. Clouds on the other hand reflect the incoming sunlight, and by doing so they decrease the light and solar energy input into Earth's atmosphere. However, clouds trap infrared radiation coming from Earth at night and prevent it from being released into space. The carbon dioxide cycle is considered as the thermostat of the planet. If Earth's temperature increases, then carbonate minerals are formed in the oceans at high rates. This results in increased absorption of carbon dioxide in the oceans, thus reducing the quantity of carbon dioxide in the atmosphere. Reduction of carbon dioxide level affects the greenhouse effect. Carbon dioxide level will rise. This will cause a strong greenhouse effect and Earth will have warmer climate.
In this lesson, students will learn about greenhouse effect and factor causing greenhouse effect. So, अब हम एक्टिविटीज़ को मतलब पढ़ लेते हैं. Okay, let's do it. Global warming. There is a gradual increase in the average temperature of Earth's atmosphere in the last 100 years. It has risen about 1 degree centigrade since 1900. Sources: greenhouse effect, pollution, deforestation. Or the atmospheric concentration of carbon dioxide measured from Antarctic ice core data implies that Earth's climate has been pretty stable over the past 400,000 years. It also shows a rapid increase of about 30% in the past few centuries, from 270 parts per million to 370 parts per million. Global warming. The site यहाँ पर शो किया जा रहा है changes in carbon dioxide and temperature in the last 400,000 years. Thousands of years of before present temperature. इससे बात चलते हैं आगे. Precise measurement of atmospheric carbon dioxide concentration is available only in the last few decades. Information about atmospheric carbon dioxide concentration and temperatures in the past can be inferred by several different methods: tree ring or deep ocean sediment, ice core records, corals. Global warming located high in mountains and in deep and in polar ice caps. Ice has accumulated from snowfall over many millennia. ठीक है, उसके बाद है scientists drill through the deep ice to collect ice cores. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है these cores contain dust, air bubbles or isotopes of oxygen that can be used to interpret the past climate of that area. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है an increase in atmospheric temperature will lead to the increase in the water vapor content of the troposphere. Because water vapor is a strong greenhouse gas, the increase in water vapor in turn causes enhanced greenhouse effect, raising the temperature more. सही हो गया. So, higher atmospheric temperature will cause more evaporation of water, which leads to even higher temperature. Clouds reflect sunlight, they decrease the solar energy input into Earth's atmosphere during the day, but they trap IR radiation from the Earth in night. Carbon dioxide cycle is a thermostat of Earth. If Earth warms up a bit, then carbonate minerals formation in the ocean at a higher rate. The rate which the oceans dissolve carbon dioxide gas increases, pulling carbon dioxide out of the atmosphere. Or the reduced atmospheric carbon dioxide concentration leads to a weakened greenhouse effect that counteracts the initial warming and cools the planet back down. If Earth cools a bit, carbonate minerals formation slows down in the ocean. The rate at which the oceans dissolve carbon dioxide gas decreases, allowing the carbon dioxide released by volcanism to build back up in the atmosphere. The increased carbon dioxide concentration strengthens the greenhouse effect and warms the planet back up. Okay, so my reading हो गई है. अब हम लोग जो है ना अपनी पोस्ट असेसमेंट कर लेते हैं फटाफट से. ओके, आई होप आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही होगी. ओके. डैश ब्रिंग्स ऑल द टॉक्सिक केमिकल्स इन एयर बैक इनटू द सरफेस रन ऑफ. मैंने प्रेसिपिटेशन लगाया था और यस पता नहीं सही होता है कि नहीं. Some bacteria are sensitive to ultraviolet rays. हाँ, yes. X-rays, infrared, ये ultraviolet से है. मेरे को dash the correct sequence of stages of water cycle. Evaporation, transpiration, जी नहीं. evaporation, transpiration, condensation, precipitation. एक सेकेंड. precipitation,
condensation, precipitation, evaporation, precipitation, transpiration, surface runoff, infiltration, condensation. ये लग रहा है मुझे, देखते हैं क्या होता है। वेल ऑल आर करेक्ट है, इसको कर लेते हैं क्रॉस। और यहाँ पर मैं अपनी इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। यहाँ इस वीडियो में 2 के 3 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो सर थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।